हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो बेटा, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, जो कि आपका पहला चैप्टर है सिलेबस का। व्हाट्स अ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? अगर आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने को कहूँ, देन डू यू अंडरस्टैंड? केमिकल रिएक्शंस डिफाइंड एज such processes or process in which the original substances, जो chemical substances हैं, which we take, that also known as reactants. Such processes in which the original substances lose their nature and identity. जो आपने पहले चीज़ें ली हुई है, जैसे सपोज मैं एक रिएक्शन लिखूँ आयरन एंड वाटर. This is the iron piece and this is the water. These are two individual substances, have their individual nature and identity. When we add iron in water and start heating, then we get Fe3O4 and hydrogen. Hydrogen बनती है. After the reaction, what you get? Known as products. और वो जो products होंगे, उनका नेचर होगा, उनकी जो आइडेंटिटी होगी, वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी. सो वही लिखा है यहाँ पे, सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. जैसे भी इस केस में था Fe3O4 एंड हाइड्रोजन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो बेसिकली व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस? इसको बेटा मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में आपको कहूँ, दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. रिएक्टेंट साइड एटम्स कहीं और हैं और आफ्टर रिएक्शन वी गेट प्रोडक्ट्स में एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, बट कंजर्व रहते हैं. अभी हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, शायद आपने 9th में भी पढ़ा हो कि एटम जितने रिएक्टेंट साइड थे उतने ही प्रोडक्ट साइड रहेंगे. ठीक है. So this defines the process in which the original substances lose their nature and identity and form new substances with different properties. जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, आयरन solid, water, steam reacts together to get Fe3O4 as a solid and hydrogen as a gas. It's a chemical change. एंड व्हाट्स अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो आपने लिए हैं, मतलब उसको रिएक्टेंट भी नहीं कहना चाहिए, जो हमने इनिशियली सब्सटेंसेस लिए हैं, ठीक है, वो केमिकली आफ्टर द प्रोसेसिंग सेम रहते हैं. जैसे वाटर है, वी टेक वाटर आइस, स्टार्ट हीटिंग, देन वी गेट वाटर बट इन लिक्विड फॉर्म. बोथ आर वाटर, chemically both are same, but they differ in their physical nature, physical property. That is called physical change. But chemical change में क्या है कि जो आप individually substances लोगे, they lose their identity and form some new substances. ठीक है. The process involving a chemical change, चाहे आप इतना भी लिख दो कि process involving a chemical change is called chemical reactions. या फिर आप ये बता दो कि ओरिजिनल सब्सटेंसेस ने अगर नेचर आइडेंटिटी लूज कर दी, कोई नया सब्सटेंस बन गया, तो भी हम उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं. और जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इस साइड जो लिखे हैं रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन कराए हमने इनको लिया है, इसके बाद प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, एरो से शो कर दिया, दिस इज द केमिकल इक्वेशन. हाउ कैन आई राइट अ केमिकल इक्वेशन? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स always should be mentioned their individual states, physical state, solid, gas. But I still see this reaction is not a balanced equation. So how can you balance the equation? Total number of atoms of one type in one side should be equal to the total number of atoms of the same in the another side. जैसे आप देखो यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए. यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 4 कर लो. अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 4 कर दो. दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ द बैलेंसिंग. देयर आर सम प्रॉपर मेथड ऑफ बैलेंसिंग आल्सो. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशंस? कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, burning of candle, wax, fuels. These are some example of chemical reactions or chemical changes. Respiration, do you know respiration? The food in form of glucose in our body, when we inhale oxygen from the surrounding, oxygen combined with the glucose
ठीक है, बल्कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कंबस्ट टू दैट ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. That heat or energy we use in our daily physical activity and mental activity and biological activity of the body also. Now, how can you balance the equation? By hit and trial method. How can you define a chemical equation? This is the representation of a chemical reaction in terms of reactants and products. Okay. The another term often used with the chemical reactions, exothermic and endothermic. What do you mean by exothermic reactions, endothermic reactions? Whenever any reaction is performed, if during the reaction some amount of heat is released along with the completion of reaction, amount of heat is released after the completion of the reaction, such reactions are called exothermic reactions. And when during any reaction heat is absorbed from the outside or heat is given to the reaction to perform the reaction, heat absorbed by the reaction from the surrounding during the completion, known as endothermic reactions. There are some examples, like see the examples: iron S2 Fe3O4 plus S2, CH4 plus O2 gives CO2 and water, N2 3S2 gives 2NS3, Zn plus S2SO4 gives ZnSO4 and S2. These are some other example of chemical reactions. These are the reactants, these are the products. These are some questions related with what is a chemical equation, how can you write a chemical equation, how can you write a chemical equation like this, balancing of a chemical equation like this. You can balance the equation by balancing the equating the number of atoms of both sides. It's called principle of atomic conservation. Both sides of atoms should be equal. ठीक है. Exothermic and endothermic reactions are what? These are those reactions during a reaction if heat is evolved or released, called exothermic. This is the exothermic, this is the exothermic, this is the exothermic, sorry, this one is the endothermic. And all these three reactions are exothermic reactions because heat is released. Okay, so this is the general discussion about chemical reactions. Now we have to perform some chemical reaction activities, some reactions, and then types of chemical reactions. All these in the next lecture. So just see the video and go through the terms and questions. जो चीज़ आपको ना समझ आई आप पूछ लो. ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं. नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा. वो फिर आपको और बेनिफिशियल होगा और आपको समझ में भी आएगा. ठीक है जी, थैंक यू.